back to my channel. This is Riddhi here and you're watching my untitled makeup look for today. Also, you can check out my new French channel where I teach everything about French language, its culture. So yeah, do not forget to subscribe to that channel as well if you are keen to learn French. Before we dig into the video, be sure to check out all of my other social media links in the description where I post every single day. So I'm starting off by using the primer first and then we'll move on to our foundation. So मैं use कर रही हूँ L'Oreal का primer. Skin has become really dry, guys. Even after applying so much of moisturizer. I think मैं थोड़ा और primer लगा रही हूँ नीचे की तरफ because वहाँ पे भी pores है. I've seen it. So to close them, I need to apply it. Today हम eyebrows को shape करने वाले हैं. So yeah, stick with me. फाउंडेशन ऊपर ही पड़ा था एंड मैं अंदर ढूंढ रही थी कहाँ. Anyways, I'm using the Maybelline Fit Me matte plus poreless foundation in the shade 230. Let's just apply directly today. If you have pimples, then what you can do is पहले आप concealer लगा सकते हो and then you can again apply foundation on that. You'll get so many layers that it will get hidden through that. So I don't have any pimples, so I'm directly applying the foundation and एक nice coverage मिलता है उससे. First just forehead को आप prep कर दो with foundation. Then using the concealer हम लोग अपनी eyebrows को shape करेंगे. Oh, I have a pimple over here. अब भी देखो. I need to hide it. But I'm trying my hard to show you guys the real makeup. Oh, it's a bit darker than my skin tone, guys. अभी मैंने देखा. But for face, it's pretty much same only. So ज़्यादा difference नहीं. But I think palm पे वो ज़्यादा ही दिख रहा है दूसरा कलर. एक बना रही हूँ मैं उसे. तो आज मैं एक फ्रेंच ट्विस्ट हेयर स्टाइल भी बनाने वाली हूँ. एंड तक देखना मत भूलना ये वीडियो को. अभी मैं लगा रही हूँ लैक्मे सीसी क्रीम एंड देन एक ब्रश की मदद से आई विल शेप माय आईब्रोज. गाइस जस्ट नाउ मुझे पता चला कि जो लाइटिंग मेरी थी वो थोड़ी सी वार्म में चली गई थी. Didn't realize that, but anyways, let's move on. It has become messy, but what can we do? पहले मैं अंडर आइज पे लगा रही हूँ जस्ट सो आई कैन गेट रिड ऑफ दिस. ऊपर के डायरेक्शन में आपको ऐसे करके लेके जाना है ताकि वो एक शार्प लुक मिले आपको. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश यू कैन शेप योर आईब्रोज. लाइक दिस. एंड जो रेस्ट बचा है दैट यू कैन पुट इट ऑन योर आईलिड्स लाइक दिस. जस्ट ड्रैग इट डाउन एंड ब्रश की मदद से मैं अंडर आइज का भी जो कंसीलर है वो सेट कर रही हूँ. नाउ आई फील दैट माई आईब्रोज इज नाइसली शेप्ड and we can start with our eye makeup. I really wanted to do the Latina makeup challenge, but then it's a kind of a same makeup that I did in my last video, and it was like just the brown eyeshadow you have to put and just make a winged liner and that's it. So I didn't want to go into the same thing again. So मैंने सोचा कि एक new eye look ही try कर लेते हैं, that to a graphic liner. So yeah, let's see how it goes. एक मिनट में आई अपना इंस्पो लेके आ गई हूँ मैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज माई आई स्किन के आई शैडो पैलेट एंड उसमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट कलर विच आई यूज़ वेरी लीस्ट इन माई मेकअप वीडियोज. बट टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ इट अ लॉट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट अगर आपके पास वाइट काजल है यू कैन यूज़ दैट फॉर बेटर लाइन्स, ग्राफिक लाइन्स यू कैन से. जहाँ भी आपका क्रीज है ना वहाँ पे आपको एक बस हाफ सर्कल बनाना है लाइक दिस. डोंट गो टू मच डाउन, जस्ट बी ऑन द अपर साइड.
I don't have a white kajal, that's why I am struggling a bit. नॉर्मल विंग जैसे आप नीचे करते हो वैसे ही आपको ऊपर करना है एंड देन जॉइन इट. A few moments later. Or should I do one thing? Instead of applying the white eyeshadow, I can use a black liner and make those graphic lines. What do you say? Like, you'll see the video later on only. So what I'm thinking is to use my Too Faced eyeliner and just make those graphic lines. Just be careful on your eye crease area because liner सूखता नहीं है जल्दी, so it can get spread. Now जो ऊपर की लाइन थी वो मैंने नीचे खींच ली है to make a pointed line. Wrong कर दिया. And I have to apply concealer again just so वो थोड़ा सा brighten हो जाए. मैं ये ऑन कैमरा वाइप करने वाली हूँ. Just making it pointed. I'll have to see in my close-up mirror. Literally this Q-tip saved me guys from so much of redoing. So do have it when you are not sure about your makeup looks. Now मैं use कर रही हूँ एक dark shimmer. Just in the middle में लगा रही हूँ इसे. I think it looks good. Now the only part is remaining is to add some shimmer on the inner corners. I'm gonna take the copper shimmer, just put it inside here. Now I'm applying the Maybelline Sky High mascara. There are a lot of good reviews about this mascara, but the only complaint that I have with this is to remove it. It's really difficult. But still today I'm going to use it. It's a bit sticky too at the start. Lower lash पे लगाना एक task है guys. So just be careful. I think it's looking good and it's a new look that I've created today. Let's just apply the powder now. So मैं use कर रही हूँ Maybelline का Fit Me Loose powder in the shade Light 15. It's one shade lighter than my skin, so I think it works for me. Oh, we are still to do the contouring, right? And yeah, first just let's do our eyebrows before I forget. Using my eyebrow palette, brush कर लेना अच्छे से because then it doesn't look good अगर आप अच्छे से brush नहीं करोगे. I don't know what this look is going to be called. You let me know a title for this look, guys. Just apply contour. I'm using the Insight contour and highlighter duo stick. I'm going to use my brush to blend it upwards. I think ये साइड पे थोड़ा ज़्यादा लग गया है. अगर ज़्यादा लग जाता है then you can just wipe it off on the upper part. वो अपने आप हो जाएगा. Now to just make contouring look really natural, मैं use कर रही हूँ powder again and just वो shape में मैं थोड़ा fill up कर रही हूँ. Now what we are remained with. I don't think so today I'm going to apply any blush because it's a really chic eye look kind of thing, so no blush is required to make it look girly. Last part is to apply the highlighter on the nose tip. Just make sure आप अच्छे से buff कर रहे हो अपने nose को with highlighter. Time to do the lips and I'm going to do the brown lips today. So yeah, I don't have a brown lip liner, so मैं अपनी eyeshadow palette से ही use कर रही हूँ. Like this, the if we outborder ना
our lips, then it looks really filling and really plumpy and good. Do not forget to apply the lip liner, guys. I'm going to use the L'Oreal Paris lipstick. In which shade? It is in Worth It 635 medium. Look has been completed, and let's just move on to our hairstyle. But before that, should we accessorize? No, I think we should just do our hairstyle first. It's really simple. Oh, I have first time my rubber bands here only with me. So what you have to do is take a section of your hair, just leave the front strand And just section it into two parts. Twist it. Take two. Twist your strands very nicely. एक के ऊपर एक करके हमें लेके जाना है. Take another strand, twist it inside. अगर वो ऐसे छूट जाती है, then what you can do is again twist करना ही पड़ेगा आपको. Then take another strand and add it to the inside section. Twist again. करते करते आप नीचे लेके आ जाओ उसे. Then with the rubber band you can secure it nicely. मैंने पेन से उसे सिक्योर कर दिया पीछे की तरफ like this. मैं सेम वे यहाँ पे भी कर दूंगी. एक सेक्शन लो, देन उसको दो हिस्सों में बांटो, ट्विस्ट करो इनसाइड की तरफ. Then twist it on one top of the other like this. The next strand लो, अलग करो, वापस से twist करो inside में. वापस ट्विस्ट करो. So I'm gonna take a band for it. Hairstyling is not easy, guys. It's really difficult. एंड हेयर स्टाइलिस्ट जब आपकी हेयर स्टाइल कर रही है तभी भी बैठना इट्स रियली डिफिकल्ट. एंड या वी जस्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं. तो मैं ये एक गोल्डन स्टिफ ब्रेसलेट पहन रही हूँ. Going to wear chunky golden earrings. Basically everything is gold here. ब्रेड खाएगी? ब्रेड? सेका हुआ एक ब्रेड खाएगी? हाँ, बड़ा पाव बनाया है. ठीक है. तो भी खाएगी ना अभी एक? हाँ. खाने को वैसे नाम ही बोलती मेरी बहन. So मैं फिंगर रिंग्स भी डाल रही हूँ. Everything is done. Turned out to be good, like if you can see. So yeah guys, this was it from my side. I really hope you enjoyed this today's not so decided makeup look, and if you did, then do not forget to hit the like button and subscribe for more such makeup tutorials which are coming your way soon.